Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, charts in Excel. Let's know about types of charts, elements of a chart, create a chart and chart tools. Excel is a spreadsheet program that helps you to enter numerical values or data into rows and columns. You can use these numerical entries for such things as calculations and graphs. You have already learned how to apply formula and functions for calculations in the worksheet. Now, in this chapter, you will move further and learn about different types of charts in Excel. देखिए एक्सेल आपका एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है. अब प्रीवियस क्लास में भी पढ़ के आए हैं किस तरह से फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं, फंक्शंस अप्लाई करते हैं किसी भी कैलकुलेशन के लिए. अब इस क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चार्ट जिन्हें हम एक्सेल में कर सकते हैं. A chart is a tool in Excel that is used to communicate your data graphically. A chart can allow you to know the meaning behind your data. Displaying data in a well-conceived chart can make your numbers more understandable. You can use these charts to make comparisons much easier. देखिए चार्ट आपका एक टूल है एक्सेल में जो कि यूज़ किया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए, आपके डेटा को ग्राफिकली शो करने के लिए. एक जो चार्ट है वो आपको अलाउ करता है आपको जो डेटा के पीछे का जो मीनिंग है वो आप उसे जान सकते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ चार्ट्स. Excel supports many types of charts. Each type of chart has a specific application. The chart type you select will depend on the type of data you're using and the purpose of the chart. Here are some commonly used charts in Excel. Number one is pie charts. Pie charts make it easy to compare proportions. Each value is shown as a slice of the pie, so it is easy to see which values make up the percentage of a whole. Pie chart आपने जैसे मैथ्स में किया है सेम ऐसे ही आपका pie chart भी. इससे प्रोपोर्शन को कंपेयर करना काफ़ी ईजी हो जाता है, राइट. आप एक पूरा होल है, एक सर्कल है, उसमें कुछ पार्ट्स आपके डिवाइडेड होते हैं तो आपको पता चल जाता है कौन सी वैल्यू आपकी ज़्यादा है, कौन सी वैल्यू आपकी कम है. Column charts. Column charts use vertical bars to represent data. They can work with many different types of data, but they are most frequently used for comparing information. Column charts में आपके vertical bars use किए जाते हैं जो डेटा को represent करते हैं. Next one is bar charts. Bar charts work just like column charts, but they use horizontal rather than vertical bars. आपके bar charts भी column charts की जैसे ही होते हैं, बस इसमें horizontal आपके bars होते हैं. Next one is line charts. Line charts are ideal for showing trends. The data points are connected with lines, making it easy to see whether values are increasing or decreasing over time. आपके line charts आपके trend show करने के लिए काफ़ी ideal होते हैं और इसमें values को फाइंड करना बड़ा इजी होता है कि कौन सा इंक्रीज हो रहा है या कौन सा डिक्रीज हो रहा है. नेक्स्ट वन इज एरिया चार्ट्स. एरिया चार्ट्स आर सिमिलर टू द लाइन चार्ट्स एक्सेप्ट द एरियाज अंडर द लाइंस आर फिल्ड इन. एरिया चार्ट आपके लाइन चार्ट जैसे ही होते हैं, सिमिलर होते हैं, बस आपका जो लाइंस के अंडर एरिया होता है वो फिल्ड इन होता है. नेक्स्ट वन इज सरफेस चार्ट्स. Surface charts allow you to display data across a 3D landscape. They work best with large data sets, allowing you to see a variety of information at the same time. सरफेस चार्ट आपको एक्चुअली आपका जो डेटा है उसको डिस्प्ले करते हैं 3D लैंडस्केप में और ये आपके लिए बेस्ट तब वर्क करता है जब डेटा काफ़ी ज़्यादा हो. Elements of a chart. Various elements of a chart in Excel window are shown and discussed below. Number one, chart area. A chart area contains everything inside the chart window, including all parts of the chart. Chart area में आपके सारी चीज़ें होती हैं inside chart window के अंदर जिसमें आपके chart के सारे parts होते हैं. Data marker or data point. A data marker is a symbol on the chart that represent a single value on the worksheet. A data marker can be a bar in a bar chart, a pie in a pie chart, or a line on a line chart. Data markers with the same shape or pattern represent a single data series in the chart. आपका डेटा मार्कर एक्चुअली एक सिंबल है चार्ट में जो कि सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है वर्कशीट में. जैसे कि डेटा मार्कर आपका बार चार्ट में बार होता है, पाई चार्ट में आपका पाई होता है एंड लाइन चार्ट में आपका लाइन होता है. Data series. It is a group of related values such as all the values in a single row in the chart. A chart can have just one data series. ये आपका ग्रुप होता है रिलेटेड वैल्यूज का जैसे कि आपकी सारी वैल्यूज एक सिंगल रो में होती हैं चार्ट के. Next one is axis. It is a line that is used as a major reference for plotting data in a chart. In two-dimensional charts, there are two axes: the x-axis, horizontal category, and the y-axis, vertical value. देखिए आपने चार्ट तो ड्रॉ किया होगा, ग्राफ ड्रॉ किया होगा, उसमें आपके एक्सेस होते हैं दो, एक एक्स एक्सेस और एक वाई एक्सेस. तो एक्चुअल में एक ये लाइन होती है जिसका यूज़ किया जाता है एज अ मेजर रेफरेंस. हम डेटा को प्लॉट करते हैं किसी भी चार्ट में. Next one is tick mark. It is a small line intersecting an axis. A tick mark indicates a category, scale or chart data series. A tick mark can have a label attached to it.
एक आपकी छोटी सी लाइन होती है जो कि एक्सिस पे इंटरसेक्ट करती है एंड एक्चुअल में टिक मार्क इंडिकेट करता है किसी भी कैटेगरी को, स्केल को या फिर चार्ट डेटा सीरीज को। Plot area. It is the area where your data is plotted and includes the axis and all markers that represent data points. ये आपका एरिया होता है जहाँ पे आपका जो डेटा होता है आपका प्लॉटेड होता है। Next one is grid lines. These are the optional lines extending from the tick marks across the plot area. It makes easier to view the data values represented by the tick marks. ये आपकी ऑप्शनल लाइंस होती हैं जो आपकी एक्सटेंड होती हैं टिक मार्क से प्लॉट एरिया तक, और ये काफ़ी आपका इजी कर देता है डेटा वैल्यूज़ को व्यू करना जो कि टिक मार्क्स के द्वारा रिप्रेजेंटेड होता है। Chart text. It is a label or title that you add to your chart. Attached text is a title or label that is linked to an axis such as the chart title. Chart text आपका एक लेबल या टाइटल होता है जो कि आप अपनी चार्ट को ऐड करते हैं, अपने चार्ट में ऐड करते हैं। Legend. It is a key that identifies patterns, colors or symbols associated with the markers of a chart data series. The legend shows the data series name corresponding to each data marker. लेजेंड आपका एक की है जो आइडेंटिफाई करता है आपका पैटर्न क्या है, कलर क्या है या सिंबल जो कि आपके मार्कर से एसोसिएटेड होते हैं किसी भी चार्ट डेटा सीरीज में। Next one is data table, a grid that appears in the chart displaying the exact data that is used to create the chart. डेटा टेबल आपका एक ग्रिड है जो आपके चार्ट में अपीयर होता है एंड ये एग्जैक्ट डेटा को डिस्प्ले करता है जो कि आपको चार्ट को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। क्रिएट अ चार्ट. बिफोर मेकिंग अ चार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिफाइन अ डेटा सीरीज. अ डेटा सीरीज is a related set of data points. In an Excel worksheet, it is usually one row of data with associated column headings or one column of data with associated row headings. All chart types can plot both single and multiple data series except pie chart. Let us learn creating charts using line chart. To create a line chart, the steps are as follows. Type the data in your Excel worksheet. Select the range A1 is to D6. On the Insert tab in the Charts group, choose Line Chart and select Line with Markers. चलिए अब इसे Excel पे करके देखते हैं। सबसे पहले आप डेटा करेंगे टाइप, देन इसे सिलेक्ट करेंगे सेल्स को, देन आपका आएगा इंसर्ट एंड आपका लाइन चार्ट एंड लाइन विद मार्कर। Chart tools. Once you insert a chart, a set of chart tools arranged into two tabs will appear on the ribbon. These are only visible when the chart is selected. You can use these two tabs to modify your chart. देखिए आपका जैसे आप चार्ट को इंसर्ट करते हैं, चार्ट टूल्स का एक सेट आपका आ जाएगा दोनों टैब्स पे जो आपके रिबन पे अपीयर होगा। उसके बाद ये तभी विजिबल होगा जब आपका चार्ट सिलेक्टेड होगा, और उसके बाद आप चाहें तो आप अपने चार्ट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। Change chart type using design tab. From the chart design tab, click the change chart type command. A dialog box appears. Select the desired chart type, then click OK. चलिए अब हम इसे Excel पे करके देखते हैं। सबसे पहले आप आएंगे चेंज चार्ट टाइप, फिर आपको यहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स मिलेंगे, आप कोई भी चूज कर सकते हैं एंड देन ओके, एंड इस तरह से आपका चार्ट टाइप चेंज हो जाएगा। No more. Contextual tabs are tabs that only appear when you need them, which are so-called chart tools. आपके जो contextual tabs होते हैं वो tabs होते हैं वो तभी appear होंगे जब आपको उनकी ज़रूरत होती है, और उन्हें कहते हैं chart tools. There are two chart contextual tabs, chart design and format. The contextual tabs become available when you create a new chart. ये आपके दो टाइप्स के होते हैं एंड ये तभी आपको अवेलेबल होंगे जब आप एक न्यू चार्ट को क्रिएट करते हैं। Change chart type using Insert tab. You can easily change a chart type at any time. Following are the steps to change a chart type. Select the chart. On the Insert tab in the Charts group, choose Column Chart and select 3D clustered column. तो चलिए इसे भी करके देखते हैं एक्सेल पे। सबसे पहले हम चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, देन आपका इंसर्ट, देन आपका कॉलम चार्ट एंड यहाँ पे आपका आएगा 3D क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट एंड देन आपका ये चेंज हो गया। Switch row or column. Sometimes when you create a chart, the data may not be grouped the way you want it to be. If you want your score displayed on the vertical axis, then to be displayed on the horizontal axis instead, following are the steps. Select the chart. You will notice that the Chart Tools contextual tab is activated. On the Chart Design table, click Switch row or column. देखिए कई बार हम चार्ट क्रिएट करते हैं लेकिन हमारा
जो डेटा हम जैसे ग्रुप करते हो उस तरह से नहीं हो पाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं, राइट। तो कुछ स्टेप्स हैं आपके जो मैंने आपको बताया, और इसे अब हम करके देखेंगे एक्सेल पे। सबसे पहले आप चार्ट सेलेक्ट करेंगे, देन आप जाएंगे डिजाइन टैब में एंड देन स्विच रो एंड कॉलम, और इस तरह से आपके रो और कॉलम स्विच हो जाएंगे। Add a chart title. You can easily add a chart title to your chart in Excel. To add a chart title, following are the steps. Select the chart. You will notice that the Chart Tools contextual tab is activated. On the Chart Design tab, in the Chart Layouts group, click Add Chart Element, Chart Title. Click Above Chart or Centered Overlay. You will see a caption Chart Title in the chart. Enter desired title, for example, Average Score. चलिए अब हम इसे Excel पे करके देखते हैं। सबसे पहले चार्ट सिलेक्ट करेंगे, देन आपका डिजाइन टैब, ऐड चार्ट एलिमेंट, चार्ट टाइटल एंड अबव चार्ट, एंड इस तरह से आप यहाँ पे टाइटल ऐड कर सकते हैं जो कि आपका है एवरेज स्कोर। Quick review. A chart is a tool in Excel that is used to communicate your data graphically. Column charts can work with many different types of data, but they are most frequently used for comparing information. Line charts are ideal for showing trends. Data series is a group of related values, such as all the values in a single row in the chart. Legend is a key that identifies patterns, colors, or symbols associated with the markers of a chart data series. Once you insert a chart, a set of chart tools arranged into two tabs will appear on the ribbon. चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।